So we had a cup of tea and it's almost roughly 6:45 and we have left, and this is how Abhijit looks. Well, we just missed him. And this is how Abhijit looks. And the new Rhino jackets and all the saddlebags. It's a fully loaded bike. Well, we will just ask him कि भाई कौन सी चीज़ कितने में लिए, कहाँ से लिए, and then I'll just let you know. But we also have to review the bike. कि बाइक कैसी है, चलने में कैसी है, एवरेज क्या है, and everything. Let's see. But for now, it's 6:45 and we have left. He'll be joining me till Lonavala. I think I'll be having breakfast there and then heading ahead. And this is what I'm talking about, a beautiful transition from night to the daylight. And this is what every biker, I'm sure, loves about. It's almost about to be a daylight and it's beautiful. And this is what I'm exactly talking about. If you can see, it's almost the sun is going to come up. And there's also one more person who's going to join us today. Well, he's from Vashi, so probably he'll be meeting us at Joynagar. Well, जो लोग मुंबई से नहीं है and they're watching this, well, let me tell you, for Mumbaikars, Lonavala is the nearest and the closest hill station where people do often visit. और ये दोनों लोनावला ही जा रहे हैं. वेल, मैं तो आई एम हेडिंग टू माई नेटिव, बट ये दोनों लोनावला जा रहे हैं. दे हैव सम वीकेंड प्लान्स एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ड्यू टू घाट सेक्शन, इट्स वन ऑफ द nicest place where you can ride the bike. So mostly people travel there. और ये अभिजीत ऐसे मस्त फुल्ली लोडेड बाइक लेके चल रहा है. मज़ा आ रहा है. एंड द ब्यूटीफुल ट्रांजिशन इज हियर एंड आई एम लविंग इट. खूब दिवसानी बहुत दिनों बाद आफ्टर लॉन्ग टाइम. Well, the problem is मेरे पास काफ़ी raw footages है. I have so much of raw data, but I couldn't edit them and I couldn't post them due to work. But I'll try to upload as much as possible. And now he has got this new toy, so probably he's been asking me for rides. But unfortunately, I couldn't give him time because they rides on weekend. I do have work on weekend. So I'll try my utmost to give him company at the most possible times I could, and then I'll be posting the vlogs. But for now, just enjoy this Mumbai Kolhapur. I know I have been doing this for third time on the camera, but then it's for the safety purpose as well. And बहुत दिन हुआ यार वीडियो डाले नहीं है, तो मैंने सोचा थोड़ा एडिट करके ये वीडियो तो पोस्ट ही कर देते, बिकॉज इट्स बीन फर्स्ट राइड विथ हिम सिंस ही हैज़ बॉट द बाइक एंड ही इज़ बीन इंसिस्टिंग मी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. सो डाल देते. वेल, इसके साथ हमारे साथ एक हिमालय ज्वाइन होने वाली है, विच इज़ अगेन आई गेस रफली 5-6 years old. एंड आई हैव बीन मीटिंग, मैं उसको भी पहली बार मिलने वाला हूँ. So let's see. So we have to have a company who's waiting here at the foot of bridge near the Vivekananda Stadium. And I think that there are many people. Okay, I think I saw him. I saw his bike. It's a white orange. That's a beautiful bike. That's the beautiful, the mesmerizing view I have been missing for these many days. The view is while you're riding and you are witnessing the sunrise is altogether a different thing. Well, it became possible just because Abhijit insisted कि नहीं यार चल जाते हैं. So then
फाइनली जाते हैं. Once again, very good morning to all those people who have just signed in. And let me tell you, we are heading towards Lonavala. I am heading towards Kolhapur, and these two people are heading towards Lonavala. Kalamboli पहुंच गए हैं. It's almost quarter to 8, and we plan to stop for a breakfast at Lonavala itself because we have just begun. So चलते आगे जाते. It's 8:15 and we are almost reaching Khopoli. और ये अभिजीत इधर बहुत पीछे रही है, बहुत आगे चला गया, पता नहीं कहाँ है. His mate is here right in front of me, but अभिजीत I think या तो बहुत पीछे रह गया या बहुत आगे चला गया. या अभिजीत पीछे रह गया था. He had a call. क्या लोनावला बोल रहे हैं ना? लोनावला, वो लोनावला बोल रहे हैं. Hardly half an hour for us to reach Lonavala. तो वहीं जाके ब्रेकफास्ट करेंगे. वहाँ से पुणे, सातारा, कराड़, कोल्हापुर. एंड द घाट इज ऑलमोस्ट अबाउट टू बिगिन. उनकी चर्चा चल रही है कि कहाँ खाया जाए, क्या खाया जाए. आई नो व्हाट दे आर प्लानिंग, व्हाट आर देयर प्लान्स ऑफ टू. भूख को तो आंसर सबको लगी होगी. तो चलो लोनावला ही जाके खाते हैं. ऑलमोस्ट घाट पर चालू हो गया, तो लोनावला जाके ही खाते हैं. गेल्या अभिजीतला गगनगिरी महाराजांच्या मठात गेलं होतं. इट्स जस्ट राउंड अबाउट द कॉर्नर. गगनगिरी महाराज मठ मार्ग जुनाट विभाग त्याला घेऊन गेलो होतो. अनफॉर्च्युनेटली तो शॉर्ट्स होत होता, त्यामुळे त्याला अलाव केलं नव्हतं. And the cut has already started. Yes, this right. घाटमध्ये चालवणं ही मजा आहे. हां हां हां, कुठेच नाही आहे. बट हेअरपिन नसलं पाहिजे. हेअरपिन मेक्स अ फर्स्ट ॲक्च्युली इट इज नो फर्स्ट, बट हेअरपिनमुळे थोडं पेस्ट तुटतो. बाकी इट्स दिस. अभिजीत को रिकॉर्डिंगची रिकॉर्ड हो रहा है ना, वही ठीक से रिकॉर्ड हो रहा है ना. We have almost done 86 kilometers since we started. ठीक है, मज़ा आ रही है. तसं म्हणावी तशी थंडी नाही येते. इट्स नॉट मच ऑफ अ कोल्ड हियर. आय वॉज एक्सपेक्टिंग बिट कोल्डर, बट इट्स नॉट. I opt to take the express highway and then get into Lonavala. They told me कि सर यहाँ से जाते हैं 9 o'clock and we have reached Lonavala. We'll be waiting for breakfast. I think I should be sparing another half an hour and then I am good to go. I have a lot distance to cover and less time. So we had our healthy breakfast, which was not healthy by the way. Aloo ka paratha over here, and parting our ways. कॉफ़ी अच्छी थी. कॉफ़ी पी के निकल रहे. अभिजीत को बाय, केदार को बाय, एंड आई एम राइडिंग सोलो.
इधर है ना। चलो अभिजीत, अभिजीत चल बाय। हाँ चलो, उनको छोड़ा बाय करके मैं निकल गया।